Good evening, all. Am I audible to you all? Good evening, sir. Sir, yes, sir. Okay. Everybody, please confirm. Am I audible to you all? Yes, sir. Yes, sir, audible. You can write, give a thumbs up, or you can say also. All of you, please confirm. Am I audible to you all? We're just beginning. This is a class for public administration optional. Okay, audible. 2, 3 people are replying. Others, okay. Okay, we shall wait for 5 minutes so that others can join. Then we will start. Yes, this is for public administration optional. Okay, good evening to all. I will take your public administration class. This is related to optional. We will begin the formal course in a very short period of time. Good evening. We will begin the complete syllabus. We will discuss the syllabus. We will discuss the linkages with other GS. And if at all you have not decided to take public administration as optional, then you should decide it at a early stage of your preparation. What is your optional? Okay, you should not take much time in deciding which is your optional. It should be from the beginning. You should be very clear what is your optional and why. How many of you have already decided to take public administration so that you have joined here? Or how many of you are here to know what is public administration so that you can decide whether to take or not to take? Already decided how many? Raise your hands. Okay. Others not decided? How many? Just write. Just write here. Not decided. How many people? Okay. So this is the class where you are testing the whether you are interested in the subject or not interested in the subject, or whether the subject is according to your attitude and aptitude, or it is not, whether it is a mark fetching subject or it is not, or what kind of thing is this public administration, so that whether you can take it or you will choose any other subject. That is why you have joined. Those who have not decided, I am asking those who have not decided yet. Those who have decided, okay, good. Those who have not decided, you have to decide quickly. Okay, don't delay your decision. That will be a problem for you, because your optional should be very good and you should have much more time to uh, you should give more time to your optional preparation. Okay, before we begin the formal course, anything you want to ask? I am here to teach you public administration. Okay, will what is our plan of action? Let me tell you in brief, then I will listen to your questions,
Then after some time, we'll begin the course. Directly, we'll start the subject. 3-4 classes will be free to all, as I have been told. These are open to all. Then we'll have our normal course. Okay, it will be of many hours. Okay, that is not. I cannot tell how many hours fixed semti kichi nahi. Okay, Odia is everybody can understand Odia. Yes, sir. हाँ सर. Everybody understand Odia. Yes, sir. Yes, sir. Look, you can write here. You can say also. Okay, don't feel shy. It is an interactive session. Our classes will be interactive throughout the time period. Okay, you are not. We are not school children, so that I will tell, you will listen. It will be an interaction. So you can say also directly. Unmute yourself and say, or else you write, but you have to give answers. Okay. So English and Odia, both the medium. Okay. Let me tell you what is our plan of action. Then you will ask me the questions. Then after some time, we will begin the course. Next 2-3 classes will be open to all. Okay. Then within that, you have to decide whether you will join or not. After that, this will be a closed group. It is obvious. Okay. Is that clear? Yes, sir. Okay. So our plan of action will be optional public administration. Notes will be given to you. Some notes will be dictated to you. Some books will be recommended to you. Some answer writing will be there in each class, or in 2 classes. 2-3 questions will be given to you. You have to write, show your answer sheet, or read your answers. I will rectify it, because this optional is not for prelims, it is for mains. So the answer writing is the most important thing. Okay. Unless and until you are able to produce a good answer, only learning will not be sufficient. Because ଆମେ କେତେ ଜାଣିଛେ, it does not matter. ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆନ୍ସରରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, it is fine. So ଆନ୍ସରରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା and ଏତେ ଗୁଡେ କପି ଭିତରୁ stands out କରିବା, ୟୁନିକ୍ ହବା, it requires time. So you have to have patience. First you have to understand the subject slowly. Okay, then you have to learn it, then you have to remember all the things, then you have to write answers, and that is to be best answer. Best means not ki out of the box answer, but what is asked in the question, that you have to write. Not a very difficult task. I am not a public administration PhD student. Okay, I have never read public administration before. After this preparation only, I have read it number of times, I have mastered it. Okay, so you can also do that. The only key thing is you have to read a lot, and this subject is not that boring also. Okay, because you are opting for administrative service. Okay, your aim is to clear Odisha Public Service Commission exam or Union Public Service Commission exam. Either you are going to be an administrator. Of whom? Of public, obviously, of public. So public administration is a default subject. You should know public administration. You have to know public administration. You must know public administration. If you are taking it as optional, that is good enough. You will read many things before. If you don't take it as optional, you have to read it after your selection. But you have to read public administration by default. Whatever you do as a servant, also public administration. So why not take it before? If you do not have any special interest in any other subject, why not take public administration? Okay, that we will discuss at a later stage. But what we will do is, paper 1 will be completed, paper 2 will be completed, notes will be given, notes will be dictated wherever it is necessary, and references will be given to you of which chapter to be read from, which book, which report has to be read, କେତେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, okay, କେତେ ଲେଖିବାର ଅଛି, କେତେଟା question attend କରିବାର ଅଛି, and all those things, କୋଉ way ରେ ଲେଖିବାର ଅଛି,
points लिखिबार अछि और paragraph लिखिबार अछि, flowchart करिवार अछि, answers केमति unique करिवार अछि, all these things throughout the course we will discuss, but first we will build the pillars first. Okay, slowly each concepts will be discussed, each concepts will be clear to you. You will have enough interaction with all of you, will interact with enough interaction with me also regarding your paper, regarding your all the chapters. It will be thoroughly discussed. Then one by one we will complete both the papers. In between we will have question answer. Every class or every 2 class we will have half an hour session for 2 questions. Okay, sometimes you will have test also. So all the things are included in the optionals. Okay, and it will take how much hours I cannot predict, but it will take 4-5 months. Okay, provided 3 classes per week. Classes will be in the morning, because your polity and public administration, remember, these things should be read in the morning. Okay, you cannot be tired and sit for public administration or polity both. You should be very fresh. Okay, or else it will be boring for you. Let me be very frank, it will be boring for you if you sit after a hectic day. Your mind should be very fresh, should sit for public administration or else polity also. Till now, am I audible to you? Yes, sir. Sir. Sir, ଗୋଟେ ପଚାରିବାର ଥିଲା. Okay. Is it clear? Whatever I am telling, is it clear to you? Sir, ମୋର ଗୋଟେ ପଚାରିବାର ଥିଲା, sir. Yes. Let me complete. Then we will have 10 minutes for your questions. Okay, sir. Okay. So this is how we will complete public administration after 4 to 5 months time. Or ଯଦି ତାଠୁ ଆଗ ସରିଯାଉଛି ବି ଭଲ, but we will not compromise on quality. If it takes more time, we will also provide it more times. Okay. Quality wise, there will be no compromise. So I cannot commit a time period, a restrict time period. I will not commit. But only commitment is your syllabus will be completed. You will have a proper understanding of your optionals. You will feel confident after this stage. What to write, how to write, how much to write, how much time to provide for preparation. Okay. So these things about regarding public administration will be clear. Okay. So this is what we will do in the course of time. Okay. Then many people are in confusion what to take, what not to take, all those things. Look, just because I am teaching public administration, I should not tell that you take public administration as an optional. I took it as an optional simply because I do not have any choice. Okay. I do not have any specialization. Every subject is open to me at that point of time. So, what is the best option available for me? ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଏକା ଥିଲା, so ମୁଁ କୋଉଟା ଅପସନାଲ ନେବି ଯୋଉଟା ମତେ ସବୁଠୁ ବେନିଫିସିଆଲ ହବ. It is a right approach. Okay, simple approach. Every subject is new to me. I don't know କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ର କିଛି ମତେ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ. So କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଟା ମୁଁ ନେବି ନା ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଟା ଟୋଟାଲ ପ୍ରିପାରେସନ ରେ ମତେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଲାଭ ଦବ. So I studied every subject, analyzed every subject. Then finally I took public administration because the overlapping in GS, ethics, and essay is huge. Okay, and in overall understanding of the civil services, regarding the exam, regarding the future perspective of what you will do in the future after selection, all those things, I thought public administration is good. Okay, that was my understanding, and I gave taking public administration as a optional. Each exam I gave, I have got good marks in every exam. Okay, so more thinking ସେୟା ଥିଲା ଯେ public administrator ଯଦି ହବାର ଅଛି, why not take public administration as a optional, so that in short ଆମକୁ ମତେ ଜଣା ପଡିଯିବ administration କଣ, ତାର theory କଣ, practical କଣ, and it has a huge overlapping in ethics. Okay, almost syllabus overlapping 50% syllabus ethics ର overlap କରିଯିବ, and your
GS2 is completely public administration. GS2 is nothing but public administration total. If you go to the GS2, other than 2-3 points, everything is public administration. So you will not have to read GS2. You will not have to read most of the part of the ethics. So all these things mattered for me at that point of time. I choose public administration as a optional. This is the simple strategy for me. You may have your different reasons of choose or not to choose public administration as your optional, but that is what I know. And now it is open to you. You can ask any question for the next 10 minutes. You can write here or directly ask me. ସାର୍ ଆମର ଏଇ କ୍ଲାସଟା ସାର୍ ପିଓରଲି ଅନଲାଇନ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ ନା ସାର୍? Yes. Go ahead. କାହିଁକିନା ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯେମିତି ସାର୍ ଅଫଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କରାହେଉଛି କ୍ଲାସ୍, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅନଲାଇନ୍ ପିଲା ବହୁତ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛୁ, ମାନେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିପାରୁନୁ। ଆମ ମାନେ Look, this optional will be only online. There will be no offline class for this optional. This group will be converted to a closed group. I will teach this group public administration optional only online. I will take care of all of you regarding public administration. There will be no confusion because no offline classes will be taken by me. Okay, thank you, sir. Sir, public administration रे essay ର importance केते रहबो sir कोन? Go ahead. Yes, go ahead. Anybody has any question, sir, go ahead. Sir, public administration जो निया हबो सेथरे essay जो पढु सर जेमति सोशियोलॉजी नेले सोसाइटी पाई सोसाइटी रो गोटे Yes, essay आसुची Jitendra, ता भीतर ask. सर जेमति सोसाइटी सोशियोलॉजी रे सोसाइटी रो गोटे essay आसुची तो सेमति public administration रे सेमति essay रो importance सर केते रहबो एथिरे? You are not audible to me. You can write here also. Anybody has any doubt? Am I audible to you all? Yes, sir. Yes, your essay, if you look at the essay topic, from every section they are asking essay. Okay, so there will be overlapping in case of any administrative topics comes in case of any political topic. Okay, in case of any ethical topic, philosophical topic, all those things will be covered in public administration. Look, public administration is a broad subject. Okay, the only point you will feel ଲାଭ ଦବ ଆପଣଙ୍କୁ overall understanding of civil services you will get from public administration, and public administration is very easy also. Okay, other optionals किछिटा difficulties थाई पारे, but simple public administration is not difficult. Okay, जहाँ हमें देखुचे day to day बहुत जिनस सेइथरे आसी जीव, and paper 2 is polity. Okay, simple polity जहाँ हमें polity रे पढुचे simple public administration आउ टिके डिटेल रे पढिबा. सो जो मानकर टिके इंटरेस्ट अछि पॉलिटी बेसी बेटर लागुची political analysis, because civil service is nothing but polity and economics. जो माने भलो से बुझी सारिबेनी फंडामेंटल जानि सारिबेनी व्हाट इज civil services, most of the things are politics and economics related. So जो मानकर सेही लाइन रे टिके इंटरेस्ट अछि पॉलिटिकल लाइन रे, पॉलिटिक्स कोन चलची, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कोन, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोन चलीची डिटेल्स, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज देयर फॉर देम. एंड एमिति भी आपनको GS2 रे गवर्नेंस पढियार अछि, एंड दैट इज ओनली द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, जदि आपण पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ऑप्शनल नउछन, आपण GS2 केबे भी पढिया को पडिबोनी एक्स्ट्रा. आई हैव नेवर read GS2. ओके, सिंपली GS2 is public administration. Your polity is almost covered in public administration, not almost, completely covered in public administration in detail. You will know more things in detail.
If you compare to a normal polity students and public administration student will write good answers in GS2 and ethics. It is quite obvious. Okay, better answer, better writing skills. Jone public administration students पाखरे थाई because the word power. Okay. सर मॉर्निंग रे केते बेले क्लास हो हेलो So any other doubt? सर मॉर्निंग रे केते बेले क्लास हो No, you are not audible. Subhra. सर मॉर्निंग रे केते बेले क्लास हो The class timing, these things we can discuss. We'll have a once we'll have a close group, we'll discuss all the things, class timings, material, everything will be ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଲା ଭଳିଆ. Mostly my advice will be it should be morning time, 7:30, 2 hours. It should be morning time because that is the best time to read often. Because night time ସମସ୍ତେ exhaust ହେଇଯାଇଥିବେ ଦିନ ଯାକର କାମରେ, you will not listen. Okay, so morning time will be the best according to me. But if all of you agree at a different time, then we'll have different. Let's make a close group. Then we'll have our timings. Okay. ताମାନେ ନୁହେଁ ଯେ let's say 3ଟା କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ନେବିନି ଆହୁରି ବି ନେଇପାରେ ଯଦି ଲାଗିବ ଟାଇମ୍ ହଉନି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର will more time will main thing is the content. Okay, timing, your duration, all those things will not matter. Let's say I tell you ki 4 months, but 4 months re let's say it is not completed, that doesn't mean ki 4 month re na sorry gala au padevar nahi. No, I will take another 15 days of your class. Point is you have to complete the syllabus. ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସିଲାବସ୍ ମାନେ ବି ବର୍ଷେ ଯାକ ପଢୁଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ରେସନାଲ ଡିସିସନ ନେଇକି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ସାରିବାର ଅଛି. And timing we will discuss. My advice will be from 7:30 to 9:30 or 7 to 9 morning time, fresh timing. Public administration and polity, it should be given to both. Yes, mark is not a matter in public administration. If you write good answers, I have always got good marks. The only thing in public administration is you will get more than average, that is guaranteed. Okay, if you perform poorly also you will get average. There is no poor mark in public administration. If you write बहुत ही बेकार आंसर, then you will get poor marks, or average answers यदि आपण लिखुचंती you will get more than average. That is a safe optional. But if you genuinely write good answer, you will get good marks also. किंतु other optional टिके problem कोन, it is random. Okay, better answer बहुत भलो मार्क आसी पारे, better answer बहुत खराब मार्क भी आसी पारे. I have seen this problem in other optionals. Okay, that depends upon the luck. What I have more ଗୋଟେ ଅପସନାଲ ବହୁତ ମାର୍କ ଫେଚିଂ ବି ହେଇଯାଉଛି. ଆପଣ ସେ ଅପସନାଲ ମାର୍କ ଦେଖିକି ମେ ଅପସନାଲ ନେଇଯିବେ, ବଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ମାର୍କସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡାଉନ୍. But you analyze the marks of public administration, it is constant. ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ସେ analysis କରୁଥିବେ, you will find the marks in public administration is almost constant. So you can get 220. Now it is 250 optional. Now let us wait for this year results. Then we can have a good picture of, because your syllabus and your exam pattern everything has changed. So we cannot have means previous year marks देखी कि हमें predict करी परिवानी. I mean एई वर्ष रो mark आसी जाऊ, result आसी जाऊ, we can have a good idea. But your optional, if you write good answers, you can get good marks in every optional. सेटा गोटे बेकार conception कि कोटा mark fetching मु सेटा नहीं जीवी. Okay, that should not be the case. Because mark fetching by अपन अलगा सब्जेक्ट नहीं जीवे जोटा एई वर्ष mark fetching, next year maybe न रही पारे mark fetching. Okay, आपनकर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो नथियो, आपन गोटे फोर्सफुली गोटे ऑप्शनल नबाठु बेटर होची जोटा आपन भल लागुची, बिकॉज़ यू हैव टू रीड ए लॉट अबाउट द ऑप्शनल. सब बेले आपन ऑप्शनल ही पढिबार थाए. तो टू हैव ए गुड अंडरस्टैंडिंग एंड हैव ए ग्रास्प, it will require time.
ओके टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग पेशेंस सब दरकार सो आपण जोटा भल लागु नथिवो सेटा नबा कथा जमा भी भाबंतु नहीं आपन भल लागिबा दरकार सेटा yes materials are available don't worry about materials I will dictate you the notes okay most of the things ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ notes ଡାକି ପାରେ short notes ଡାକି ପାରେ ବେଶୀ long ହେଲେ it will be provided to you at the end of the class you will have enough things with you to read revise जोठी आपनको एक्स्ट्रा दरकार it will be told कोठु पढिबार अछि केते पढिबार अछि everything will be in complete synchronization आपन पाखे थिबा दरकार because it is at the end of the day before your exam you should revise everything you should memorize everything then go to the exam or else you cannot write this is the simple thing जे जते आपन को analytical all the things simple कथा होची आपनकर जति कि मने थिबो सेति कि आपन लिखि के आसीबे एग्जाम हॉल रे सो से मने रखिया पय आपन पाखे प्रॉपर मटेरियल थिबा दरकार पढिबा पय एंड से प्रॉपर मटेरियल को आपन 15 थर पढि थिबा दरकार नहले आपन लिखि परिबेनी सो दिस इज द सिंपल ट्रुथ जोटा कि आपन कहि दउची ଆପଣ କେବେ ଭାବିବେନି କିଛି ସର୍ଟକଟ୍ ଅଛି କିଛି ସର୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଅଛି କିଛି ସିମ୍ପଲ ୱେ ଅଛି କ୍ଲିୟର କରିବାର नो इट इज प्योरली हार्ड वर्क you have to sit you have to read reread memorize practice then you will clear the exam it is the best way and it is the smart way there is nothing called smart way best way is the hard work economics ର କଣ ରିଲେସନ ଅଛି very minimal relation ଯାହା ରିଲେସନ ଆପଣ economics is a technical subject okay से ऑप्शनल जदि आपण चूज करछंती दिस इज ए टेक्निकल पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपनकर व्हाट इज द मु डिस्कशन करिवि लेट्स वेट फॉर 10 मिनिट्स आई विल डिस्कस व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल डायरेक्टली स्टार्ट द पेपर चैप्टर 1 टुडे वी विल ओनली डिस्कस व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड तार लिंक कोन अछि इकोनॉमिक्स संगे देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नो सब संगे लिंक अछि हम कहि परिबानी का संगे लिंक सब संगे लिंक अछि एडमिनिस्ट्रेशन नो सोशियोलॉजी संगे सोसाइटी संगे लिंक अछि पॉलिटिक्स संगे तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा माने इट इज इंटरलिंक्ड देन इकोनॉमिक्स मींस बजट से एंगल जदि आपण देखिबे देन बजट इज आल्सो पूरा चैप्टर हमर अछि बजट ऊपर बट इकोनॉमिक्स माने कोन टंकार मैनेजमेंट तो की करिवो विल डू एडमिनिस्ट्रेटर ही करछंती so everything is interlinked kahar ka संगे नाही बोली किछ नाही history is also interlinked with public administration history रे कोन हेतिला केमिति बेटर करिवा so if you are fascinated about administration what is administration why this is happening why this is not happening what is the policy all these things so it is the best subject for you any other doubts any other doubts No, sir. if you have any doubt please ask सर पॉलिटी पार्ट भी कवर हो अपन कवर करबे ना सर okay no vast syllabus this is a simple syllabus not no you have not seen the syllabus of other subjects I think geography you have not seen many others optionals you have not seen I am not against any optional but I can tell you about my optional that is public administration 10 12 सब 10 12 चैप्टर 10 12 चैप्टर दीटा को पेपर रे but it is not vast okay it is very simple it is not vast look paper 2 आपण जे देखिए if you read polity your constitution your preamble your parliament your executive judiciary legislature these are the chapters okay your local self government your budget everything you know that is the plus point only thing you have to read in detail and your paper 1
I do not, I didn't get it. You cover polity part, sir. So, what did you ask? Tinnu Samantray. Sir, I mean to ask is, you will cover the polity part or not? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ବୁଝି ପାରିଲିନି। ଆପଣ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲିନି। ମାନେ ସାର୍ ପଲିଟିଟା ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି ଜେନେରାଲି କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାର୍ଟ ଆଉଥରେ ଥିଓରି ପଚାରି ପାର୍ଟ। ପାରନ୍ତି ଯୋଉଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝି ପାରିଲିନି। ୟୁ କଭର ପଲିଟି ପାର୍ଟ ସାର୍ ମାନେ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଭର କରିବି ନା କରିବିନି? ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ହିଁ ପଚାରୁଛି ସାର୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣି କାହିଁ ପାରୁନି? Am I audible to you all? Okay. So ଯଦି ଆପଣ ପଲିଟି କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, paper 2 public administration is whole polity. It will be covered in detail. Those who have decided once decide, okay. You will decide first. थरे ही decide करंतु. Whatever you want to take it. Don't compare, okay. Don't overanalyze the things. Whether what is first time ଆପଣ compare କରନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, time ନିଅନ୍ତୁ, once decide କରନ୍ତୁ, then ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। Don't ସେଇଥିରେ ମାତି ରୁହନ୍ତୁନି। କୋଉଟା mark fetching, all those things. People have commented repeatedly on me. ଏ optional ରେ ହବନି, ସେ optional ରେ ହବନି, but I have scored in this optional. Simple fundamentals. If you are strong in a optional, you will get marks, whatever is the optional. And କୋଉ ବର୍ଷ କୋଉଟା mark ବଢିଯିବ କମିଯିବ, public administration will not be affected. You can go and each year ଆପଣ marks ଦେଖନ୍ତୁ। Every optional କାର ବଢି ଯାଇଥିବ, କାର କମି ଯାଇଥିବ, it depends upon the luck, but public administration ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ସ୍କୋର ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କରିଥିବେ you will get good marks, ଯଦି ଆପଣ average କରିଥିବେ you will also get average plus marks. ବଟ୍ ଯଦି ବହୁତ ଖରାପ କରିକି ଆସିଲେ that is a different thing. ବଟ୍ ଭଲ କରିକି ଖରାପ ମାର୍କ ଆସିବା ରେୟାର ଚାନ୍ସ। ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କି ଅଲଗା ଅପସନାଲ ରେ ସେ ଡର ଟିକେ ରହୁଛି। ବଟ୍ that also depends upon the luck. But as far as syllabus and ଆମର content of the service, content of the syllabus and ଆମର orientation of the subject, এই ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ public administration is the best fit. That is why I took public administration. There is nothing, ମାନେ ଆପଣ ଜଣକୁ କନଭିନ୍ସ କରିପାରିବେନି ଯେ ତୁ ନେ ନାହିଁ public administration। ସେମିତି କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଜଣକୁ ମନା କରିବାର ଅଛି public administration ନେ ନାହିଁ। First point, you are going to be an administrator. Why shouldn't you take a public administration as a optional? Second thing, there is huge overlapping. GS2 you can match the syllabus. ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି, then also you can match the syllabus. You will find the wording also. GS2 is public administration. Your ethics, half of the paper is public administration. ଯୋଉମାନେ ସିଲାବସ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି they will know. ମୁଁ ଏଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନି। ଯୋଉମାନେ ସିଲାବସ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦଉଛି। GS2 and your ethics, half of the ethics you can go. पूरा सिलेबस ही एका अछि। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ଆଉ ତାର ସବୁ ଅପସନାଲ ର କିଛି କିଛି ଓଭରଲ୍ୟାପ ଅଛି, ବଟ୍ ପବ୍ଲିକ ଏଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ର ବହୁତ ଓଭରଲ୍ୟାପ ଅଛି। obviously ସବୁ ଅପସନାଲ ର କିଛି କିଛି ଜେନରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ ର ଓଭରଲ୍ୟାପ ରହିବ, ବଟ୍ ପବ୍ଲିକ ଏଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ର ପୁରା ଗୋଟେ ପେପର, 1.5 ପେପର, ଏଥିକ୍ସ ହାଫ୍ ଆଣ୍ଡ GS2 ପୁରା। ଯଦି ଆପଣ ଅପସନାଲ ନେଇକି ସେ ପେପର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ GS2 ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଦରକାର ପଡିବନି, ବିକଜ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ନୋଟ୍ସ ହିଁ GS2 ରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ଆଡିସନ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ କଲେ ହେଇଗଲା GS2। ଏକ୍ସାମ ଇଜ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ କନଫିଡେନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଏ ସବୁରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଯଦି ରହିବ, ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଫିଲ୍ ମୋର କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ।
अदर जो माने टेक्निकल जो माने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जानी नांती अलगा सब्जेक्ट नउचंती सेमानकर ए भयटा स्टार्टिंग रू लास्ट जाए रही जाए जे गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन आम एटा वीक रोचु जोटा कि एक्चुअल कोर सब्जेक्ट हबा कथा अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन टा हम करिया को जाउचे वी शुड नो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एटा समस्त में कंपलसरी हबा कथा ए ऑप्शनल टा हबा कथा नुए मो हिसाब रे बट दैट इज ए पर्सनल व्यू कि एटा समस्त में कंपलसरी कर देबा कथा पेपर टा सो एनी अदर डाउट्स Okay, so we'll discuss what is the syllabus of public administration. Now we'll discuss. Okay, then next class we'll start from chapter 1, public administration. Now, paper 1, chapter 1 will start. Okay, 2-3 classes, as I have been told, these are open to all. Everybody can join. After 3-4 classes, we'll make a group, separate group. Those who enroll will form a group. We'll decide our timing. Okay, then we'll have a separate type of पूरा टोटल जर्नी हमें हमरो स्टार्ट करिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लोज ग्रुप है कि पढ़िले इट इज बेटर ओके दैट वी कैन इंटरेक्ट हमें बहुत दिन जाए विल हैव ए इंटरेक्शन विल हैव ए क्लोज ग्रुप विल डिस्कस द थिंग्स सो दिस इज a long association okay this will be a long association so you should be comfortable in that group okay because you are I assume that you are all freshers so the my way of teaching will be from the very basics to your advanced level very basics okay ମୁଁ ଏହା ଆଜ୍ୟୁମ୍ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବୋଲି କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯଦି ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓକେ ବଟ୍ ମୋର ଆଜମ୍ପସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସୋ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ପୁରା ବେସିକ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସିଲାବସ୍ ଆମକୁ ଯେତେ ହାୟର ଲେଭେଲ ଯାଇ ନଉଛି ୱିଲ୍ ଗୋ ଓକେ କୋଉମାନେ କେବେ ମୋର କିଛି କ୍ଲାସ୍ ଆଗରୁ କରିଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ଯିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ୟେସ୍ ସାର୍ ମୁଁ କରିଛି ସାର୍ ଓକେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ୟୁର ଭଏସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅଡିବୁଲ୍ ଟୁ ମି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ଆଚ୍ଛା କୋଉ କ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଓକେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲେ ଏଥରକ ପଲିଟି ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଓକେ ଲୟତ୍ମିକା ନାୟକ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲେ ଏଥରକ Yes, sir. so I ଦେଇଥିଲି think you are not audible to me I don't know why you write here okay whatever I am asking you write ଆପଣ ଏଥର ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି okay polity governance polity okay how did you find that polity class those who have joined ମାନେ ମୋଠୁ ପଢିଛନ୍ତି polity okay thank you okay so that means you are getting okay you are getting my style of teaching you are getting me okay so okay okay that means here same kind of teaching will be there it will be more detail more it will be slow okay it will be slow more detail okay and an interactive sessions will be there we'll have 2 hours class 3 days a week okay 2 hour class but all these things will be decided once we form a closed group okay it cannot be an open group for all reasons are obvious okay and okay the sooner we'll
make a close group, it will be better. Or else କିଏ ଆସୁଥିବେ କିଏ ଯାଉଥିବେ କି ପୁଣି ଆସୁଥିବେ କି ପୁଣି ଯାଉଥିବେ କି ଫାଷ୍ଟରୁ ପଢୁନଥିବେ କିଛି ଦିନ ପଢେଇଲା ପରେ ପୁଣି କିଏ ଆସୁଥିବେ. So all these things will mess it up. Okay, we'll have a proper group ଯୋଉମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ରହିବେ ଶେଷ ଯାଏଁ ରହିବେ, ମଝିରୁ ବି ଯିବେନି. ଯୋଉମାନେ ପୁରା ପଢିବେ, ଆଉ ଜଣେ ଆସିବନି, ଦି ଦିନ ଆସିବନି, ଦିନେ ଆସିବ, ତାପରେ ଆସିକି କହିବ ଏଇଟା କଣ ପଢା ହଉଛି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଚାଲିଛି ନା ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାଲିଛି, ସେ ସବୁରେ ଆମେ ପଶିବାନି. ଓକେ, ପ୍ରପର ଗ୍ରୁପ କରିଦବା କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ, 2-3ଟା କ୍ଲାସ ପରେ, ଦେନ୍ ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ଆମେ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କରିବା, ସବଜେକ୍ଟ ବି ପଢିବା, ପୁରା ସିଲାବସ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା, ସ୍ଲୋଲି କରିବା, ବଟ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଯେମିତି ରହିବ. କାରଣ ଯୋଉମାନେ ମୋ କ୍ଲାସ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ନଟ୍ ଏ ସିରିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍. ଓକେ, ସୋ ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ସିରିୟସ୍. ଓକେ, ୟୁ ୱିଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ଦ କ୍ଲାସ୍, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି. ଯୋଉମାନେ ବି କ୍ଲାସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡିଆ ଥିବ. Yes, so classes will not that be serious କି ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାକିବେ. ଓକେ, ନା ନା ଆହୁରି ଜୋର ଡାକିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ଅପସନାଲ ସରିବନି ନହେଲେ. ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାକିବେ ସେ ମେନ୍ସ ଏକ୍ସାମ ରେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଖିବେ ତାମାନେ. Okay, we'll start discussing the syllabus in 5 minutes. Let's take a break for 5 minutes. Come back in 5 minutes. We'll start discussing the syllabus. From the next class, we'll begin chapter 1. Okay. Look, soft copy, hard copy, all those things will be ଯାହା ମୋର dictate କରିବାର ଅଛି, I will dictate you. Okay, you have to write it. I don't have any soft copy notes. Okay, ମୋର personal notes ଅଛି. ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରେଫରେନ୍ସ ବି ଦେବି, ଏଇ ବୁକ୍ ରୁ ଏଇଟା ପଢିବେ, ୟୁ ଜଷ୍ଟ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ. ଯାହାର ସଫ୍ଟ କପି ଅଛି ସେ ସଫ୍ଟ କପିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ. ବହୁତ ଗୁଡେ କଣ କରିବାକୁ ପଡେ, ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ଓଡିଆରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କି ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହନ୍ତି ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ. ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ସେଠୁ ପଢିବି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଠୁ ପଢିବି, ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡେ ଏଇ ପ୍ରିପାରେସନ. ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଜଣାଥିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏଇଠି କରିଦବା. କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସରେ ମିଳିଯିବ, କିଛିଟା ଜିନିଷ ମ୍ୟାଟେରିଆଲରୁ ମିଳିଯିବ, କିଛିଟା ଜିନିଷ ବୁକ୍ସ ରୁ ମିଳିଯିବ, ବଟ୍ ସବୁତକ ପ୍ରପରଲି ଆରେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର ଯେ କୋଉଠୁ କୋଉଟା. ନହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ବୁକ୍ ପଢିବେ ସେ ବୁକ୍ ରୁ ସବୁତକ ଚାପ୍ଟର ପାଇବେନି. ସବୁତକ ଚାପ୍ଟର ପାଇଲେ ବି ସବୁତକ ଚାପ୍ଟରକୁ ସେଠି ପଢିବା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ. ତ ସେଇଟା କୋଉଠୁ କଣ କେମିତି ସେଇଟା ଆମେ ୱିଥ୍ କ୍ଲାସ ଆମେ ଦେଖିବାନି କୋଉଠୁ କୋଉଟା କେତେ ପଢିବାର ଅଛି. ତେଣୁ ସଫ୍ଟ କପି, ହାର୍ଡ କପି, ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କ, ସିଡି ଡିସ୍କ ଯାହା ଦରକାର we'll see in due course of time. Okay. So just come back after 5 minutes. We'll traverse the syllabus.
ओके समस्त अछंती यस ओके 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 स्क्रीन विजिबल होउची की ओके 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 एबे होतो ओके so this is our syllabus okay this is our syllabus paper 1 then your paper 2 vast syllabus के कहउछन 10टा ही तो चैप्टर अछि 10टा ही चैप्टर अछि then paper 2 भी 10टा ही चैप्टर अछि vast syllabus total नहीं misconception ओके बर्तन खाली देखंतु फर्स्ट होची एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पेपर 1 जे कोनोसी ऑप्शनल आपण नेबे तार पेपर 1 टा सबले थ्योरी रहइबो पेपर 2 टा प्रैक्टिकल रहइबो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होची पेपर 2 पेपर 1 होची सबले थ्योरी तार बैकग्राउंड कोन थियोरेटिकल स्टडी कोन रहिची ऑल विल बी इन पेपर 1 ओके पेपर 2 विल बी इंडिया रे तार एप्लीकेशन कोन सबु पेपर सेया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सेया पेपर 1 थियोरी पार्ट रहिबो बट एठी कोन थियोरी पार्ट इज लिमिटेड किछि जण थिंकर्स अछंती सेमाने कोन कोन थियोरी दैछंती बस हमहु सेती पढियार अछि सी होची टोटल दुईटा चैप्टर ताठो अधिका थियोरी नाही हमर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने so this basic concepts and principles theory of organization ओके गोटे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करिया पई कोन कोन थियोरी अछि बर्तन जहाँ भी आम सोसाइटी रे देखुचे जितेटा ऑर्गेनाइजेशन अच्छी से केमी फंक्शन करुच्ची तार बेसिक बैकग्राउंड कौन ता भितर ऑर्गेनाइजेशन ने हायर जने रहिबो जने लोयर रहिबो एटा केमी डिसाइड हैला कोठु तार इनिशियल कोठु आसीथिला ओके पावर डिवीजन केमिति होची गोटे ऑर्गेनाइजेशन भितर एडमिनिस्ट्रेशन कौन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन पब्लिक और प्राइवेट भितर डिफरेंस कौन इवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन डिसिप्लिन ता तयारी केमिति हैला पूरा फास्ट रु एपर्यंत डिसिप्लिन केमिति हे आसिला स्टेट कौन मार्केट कौन ओके गुड गवर्नेंस कौन ए सब जिंस देन तार थियोरी पार्टा क्लासिकल साइंटिफिक जेटा साइंस ना आर्ट्स ओके ब्यूरोक्रेसी रो थियोरी ब्यूरोक्रेटिक थियोरी देन ह्यूमन रिलेशन नो इंपोर्टेंस कौन ना एटा गोटे मशीन भलिया खाली ऑर्गेनाइजेशन गोटे कर देबार अछि स्ट्रक्चर लिखि देबार अछि सेटा सेमिति फंक्शन करि जिवो ना ह्यूमन नो जो रिलेशंस अछि तार किछि इंपैक्ट अछि बिहेवियर रो किछि इंपैक्ट अछि ऑर्गेनाइजेशन भितर ह्यूमन नो बिहेवियर ऊपर किछि ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करूछि ना किछि नै ओनली रूल्स एंड रेगुलेशन गो एंड फंक्शन ए सब जिंस हम ए दीटा चैप्टर रे पढिबा दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक पिलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुझि पाइले जदि हम ए दीटा चैप्टर ऊपर थरो अच्छे वी विल हैव ए बेसिक पूरा ग्रास्प पास जिवो कंप्लीट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर एंड वी विल हैव एथरा हमें बहुत टाइम स्पेंड करिबा ओके ए चैप्टर भी कंटिन्यूएशन जे लीडरशिप देखो सिंपल जिंस लीडरशिप कौन पॉलिसी केमती तैयारी हुए कम्युनिकेशन कौन मोटिवेशन कौन मोराल कौन माने कौन जिंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने गोटे कथा होची कौन जिंस आपन नुवा लागिवनी लागिवो हां सब जिंस मते किछि किछि जणा अछि आउ टिके एडिशन होची कौन जिंस पूरा फ्रेश लागिवनी जे केबे एटा सुनिनी कि जानिनी सेमती बहुत कम जिंस अछि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सो ए जो तीनटा चैप्टर हमें बहुत टाइम नबा पूरा डिटेल पढिबा बिकॉज़ दिस इज द मेन थिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन then our ministry department companies boards commission headquarter field line and staff then accountability and control गोटे important chapter आपण देखुथिबे executive legislature judiciary एगुडा सब citizen रो administration संगे कोन relationship civil society कोन right to information हम सबले देखुचे RTI कोन corruption केमदी होउची कोन पई होउची तार eradication केमदी होबो ओके सिटीजन चार्टर माने सिटीजन मानकर कोन राइट्स अछि सिटीजन माने कोन आशा करछन एडमिनिस्ट्रेशन से गोटे चैप्टर सो ऑल दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग माने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन टा कोन ओके बस थ्योरी पार्ट कंप्लीट हे गला ई दीटा तीनटा चैप्टर रे तापर पूरा सब जिंस प्रैक्टिकल ए चैप्टर टा पूरा प्रैक्टिकल तापर देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कोन कोन रिफॉर्म्स हेची एडमिनिस्ट्रेशन ने देन कंपैरेटिव माने अलग अलग जगह रे कंपेयर करी कि किछि एडमिनिस्ट्रेशन ने तारो इंपैक्ट अछि ना नाही देन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टा अछि कोन पे डेवलपमेंट करिया को अछि ना रेगुलर फंक्शन करिया को अछि सी गोटे चैप्टर अछि ब्यूरोक्रेसी संगे डेवलपमेंट केमति रिलेटेड ब्यूरोक्रेसी माने सिविल सर्विस ओके ब्यूरो मींस गोटे ऑफिस क्रेसी माने रूल रूल ऑफ ऑफिस जेमति डेमोक्रेसी रूल ऑफ पीपल
डेमोस मीन्स पब्लिक, क्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपुल, सेमती ब्यूरोक्रेसी होची रूल ऑफ ऑफिस जोटा सिविल सर्विस जोटा तार डेवलपमेंट संगे कोन लिंक कंपैरिजन करी करी हमें किसी शिखि परिबा ना शिखि परिबानी सेटा गोटे चैप्टर। देन पब्लिक पॉलिसी हमें जहाँ पॉलिसी देखुचे हमें कहि दउचे पॉलिसी इंप्लीमेंट करियार अछि से पॉलिसी कोन केमी तैयारी हुए प्रोसेस कोन तार फॉर्मुलेशन रो इंप्लीमेंटेशन रो कोन रोल केमिति हुए तार इवैल्यूएट केमिति करा जाए पॉलिसी ताको रखा जाए ना बंद कर दिया जाए। तापर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन माने हमें जोटा एबे आपण रिक्रूटमेंट स्टेज रे अछंती आपण रिक्रूट होला पर ट्रेनिंग हेबो समस्त को तापर पोजीशन मिलिवो तापर परफॉर्मेंस अप्रेजल हबो तापर प्रमोशन हेई पारे न भी हेई पारे पैसा केते मिलिवो एम्प्लॉयर रिलेशन सो एटा तो नॉर्मल जिंस ट्रेनिंग केमति हबो केमति सिलेक्शन हबो एई सब देखियार अछि। देन जोन इकोनॉमिक्स कथा पचारथले फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जोटा कि बजेट केमति तैयारी हुए कोन हुए जहाँ पूरा अकाउंट केमति हुए ऑडिट केमति हुए ए टोटल जिंस रे मते खाली कोंतु आदर को जिंसटा आपण मानकू पूरा नुआ लागुची अदर देन दैट थिंकर्स पार्ट ए सब जिंस सुनला सुनला लागुनी। को जिनसटा आदर डिफिकल्ट लागुची मते तो किछि आदर लागुनी जे आपण माने केबे पढी नथिबे से खाली दी तीनटा थ्योरी पार्ट छाड़ देले। हां थिंकर्स पार्ट कोन थिंकर्स पार्ट माने मु जो फास्ट दिटा चैप्टर आपन कहली जे से दिटा थ्योरी पार्ट सेतरे बहुत जण थिंकर्स अछन जो मानकर आईडिया हमको पढिबार अछि सब सब्जेक्ट रो किछि थिंकर्स पार्ट थांती लेट्स से आपण सोशियोलॉजी पढिबे सोशियोलॉजी रो ये सोशियोलॉजी आरंभ करचंदी कोन कोन थिंकिंग अछि जेमति कार्ल मार्क्स हेले सोशियोलॉजिकल थिंकर सेमति पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नि वेबर अछि टेलर अछंदी से सब थ्योरी दैछंदी जो को बेस करिकि वर्तमान ऑर्गेनाइजेशन वाला रन करूची से जो थिंकर्स पार्ट टा ही होची नुआ आपण मानन पई। यस यस इजी लेवल बट क्वेश्चन आर माने एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन से थ्योरेटिकल आसेनी क्वेश्चन सब एप्लीकेशन ओरिएंटेड एंड जोटा कि लेखी हबो थिंकर्स पार्ट सेते भी नहीं जे आपन को कवर करि हबोनी थिंकर्स पार्ट लिमिटेड अछि एंड सेही थ्रू ही क्वेश्चन आसे अनलिमिटेड एंड एब्सर्ड थिंकर नाहंती एतरे जे किछि भी कहि देइ जे आपन मन रखियार अछि सेमतिया थिंकर्स नाहंती लॉजिकल थिंकर्स अछंती आ गोटे सीक्वेंस रे अछंती आपनकर इजीली सेटा कवर हे जो एंड बेस्ट पॉइंट इज वंस एंड ऑल थरे आपन सरले कथा सरला से नुआ जिंस आसीबनी कि नुआ क्वेश्चन भी आसीबनी सेम जिंस को पढियार अछि। इज दैट क्लियर टू ऑल? Okay, next go to paper 2. Look, paper 2 जो मैंने फर्स्ट टाइम पे देखो जंदी just look at the syllabus. Evolution of Indian administration. एटा आपण माने को समस्त जानिया दरकार नॉर्मल जिंस जानिया दरकार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को जाउचन माने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन केमिति थिला एंशिएंट रे केमिति थिला मिडियल रे केमिति थिला मॉडर्न रे केमिति थिला देन कॉन्स्टिट्यूशन preamble DPSP fundamental right federalism then central administration prime minister council of minister secretariat ei सब okay planning commission finance commission election commission all these things in polity then same is a state administration governor chief minister chief secretary district administration means collector then block administration means BDO then local government ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ and urban local government ओडिशा रे केमति कोन अछि इंडिया रे केमति कोन अछि डेवलपमेंट्स कोन कोन हेछि 73rd 74th amendment then public services माने सिविल सर्विस ऊपर पढिबे आईएएस आईपीएस आईएफएस एगुडार रोल फंक्शन कोन ओडिशा रे जो जा होछि ओएस ओपीएस एमानक रोल कोन स्टेट सर्विसेज केमिति रिक्रूट होंदी केमिति ट्रेनिंग दिया जाय थरे हम एठी पढिचे पेपर 1 ने केमिति रिक्रूटमेंट होंदी केमिति ट्रेनिंग दिया जाय पुनी थरे देन this is repetition थरे पढिचे ता आउ थरे देन कंट्रोल जो पैसा जाउची ता केमिति कंट्रोल करा होची जेमति कि कंट्रोल ऑडिटर जनरल पॉलिटी रे गोटे चैप्टर अछि एटा सेही चैप्टर देन प्लानिंग तो आउ नाही हमें नीति आयोग पढिबा नीति आयोग गोटे चैप्टर देन वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन वेलफेयर केमति होची लोक मानकर एससी एसटी ओबीसी वुमेन चाइल्ड ए समस्त वेलफेयर जो कोन केमति करा जाउची वेलफेयर प्रोग्राम्स कोन कोन अछि ऑल दोस थिंग्स देन गोटे मिसलेनियस चैप्टर जोडे किछि सब्जेक्ट पाइले नाही कोठु कोन आडी कि सब गोटे जगह रे सेंटर स्टेट रिलेशन गोटे पॉलिटी चैप्टर पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव रिलेशन माने एमपी एमएलए संगे रे ब्यूरोक्रेसी रो रिलेशंस कोन आईएएस ऑफिसर ओएस ऑफिसर को संगे एमपी एमएलए को रिलेशन कोन देन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर इंडिया रे केमिति एंड एथिक्स देन करप्शन इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन लोकपाल लोकायुक्त करप्शन केमिति होची कोन ऑलरेडी थरे हमें देखि सारछे एटा सेकंड टाइम
देन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्रिमिनल केमती हे जाउछंती then economic policy, all these things, IT and Indian administration. So these are very very basic things, very interesting things. किछि आदर नाही जो माने कहउछनी सिलेबस भास्ट से माने थोरोली सिलेबस टा पढी नांती एक्चुअली किछि बोली किछि नाही पूरा आराम से यदि आपण सिस्टमैटिकली पढिबे 4-5 months रे एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड रिगार्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा पॉलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 यदि आपण पॉलिटी पढी दउछंती देन you will master public administration. So दीटा पेपर आम पूरा ट्रावर्स कले कहार किसी डाउट अच्छी सिलेबस ऊपर आम जो डिस्कशन करछे माने पाठ पचारिया स्टार्ट करंतुनी सिलेबस ऊपर कहार किसी डाउट अच्छी ए ही आम पढ़ा सिस्टमेटिकली पढ़ा मे भी गोटे चैप्टर पेपर 1 गोटे चैप्टर पेपर 2 कि दीटा चैप्टर पेपर 1 दीटा चैप्टर पेपर 2 मिसई मासई पढ़ा बट सबू सेक्शन पढ़ार अच्छी सबू पढ़ार अच्छी एंड किछटा अननेसेसरी जिनस भी अच्छी जोड़ा कि हमको इग्नोर करियार अच्छी एतिकी ही सिलेबस एतिकी सारी देले हमर ऑप्शनल से सबुठु बहुत छोटा ऑप्शनल बोधे एटा हितबो मेजर पार्ट इज द थिंकर्स पार्ट थ्योरी पार्ट से पार्ट सरी गले बाकी पार्ट आपनकर बहुत जल्दी सरे सेडा आपन सब जानि थांदी पॉलिटी रे खाली एक्स्ट्रा जहा पॉइंट्स थाए ताको करिया को पड़े सिलेबस रो पीडीएफ आपन ओपीएससी साइट रे पाउ नांदी कि देखो सब जिन शेयर करिवे एबे कोठी शेयर करा जिवो मते जणा नै वंस हम गोटे क्लोज ग्रुप फॉर्म कर देले हम गोटे व्हाट्सएप रे कि कोठी टेलीग्राम रे ग्रुप फॉर्म करले सेठी हम जहा डिस्कशन करियार अछि करिया एबे आपण टिके निजे एफर्ट दियंतु सिलेबस रो पीडीएफ आपण को मिलुनी ओपीएससी साइट रे जांतु नोटिफिकेशन डाउनलोड करंतु 2022 रो सेत्र आपण ईच पेपर 1 2 3 4 ईच ऑप्शनल लो सब किछि पाइबे so this is just an introduction class एथरे मो किछि सब्जेक्ट स्टार्ट करिनी नेक्स्ट क्लास रो विल डायरेक्टली स्टार्ट व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक्स नोट्स आपनकर बेसिक्स जहा रहइबो आपन कहि दउची आपनकर क्लास नोट्स देन मटेरियल जहा आपन मिलिबो ओके देन बुक्स okay books so your will discuss it okay बर्तमान किसी दरकार नहीं बट आपण खाली जानिबा पई no next class will discuss एबे आपण कोइ किछ लाभ नै but these things you have to complete okay class notes material books तात अधिया दरकार नहीं and your current affairs same as polity okay polity रो current affairs same nothing public administration रो current affairs सेमति किछ न थाए polity रो current affairs is sufficient for public administration option anything anybody want to ask देखो ऑप्शनल टा सेमिति नेथले रो किछि मीनिंग मु बुझी परनी मु नेइथली एग्जाम टा क्लियर करिया को ओके सेमिति नेथले माने कोन माने मु खाली खुशी रे पढिया को नेइथली ना ना मु नेइथली एटा पढी के एग्जाम टा क्लियर करिया को एंड मते जेमती ओवरलैपिंग बेसी मिलिबो सो मु लास्ट टाइम भी सेति पय एथरे स्टिक कली नले बहुत ऑप्शन थिला मो पाखरे चेंज करियार बिकॉज़ मु थरे एग्जाम देइनी मु 3-4 थर एग्जाम देइची सो मो पाखरे बहुत ऑप्शन थिला ऑप्शनल चेंज करिया को बट मते से सब्जेक्ट भल लागिला एंड मोर मार्क भी आसिला सब बेले एंड मते ओवरलैपिंग एते मिलला जे मते बहुत जिंस पढिया को पड़ेनी सेति पय मते ठीक रहिला
एटा नेली बोली मते इजी लागिला जोटा आपण कहउचंदी सेटा देखो आउ कोन नैथिले भलो हिथांदा सेति पई निजरो एटीट्यूड एप्टीट्यूड आउ अंडरस्टैंडिंग भी थिबा दरकार ना से जिंस ऊपरे जेतु मु एटा पढिली मते भल लागिला तेणु मु एटा कंटिन्यू करली क्वेश्चंस तो आसी ही जाउची फास्ट रू मु ही गोटी ही ऑप्शनल नैची सब बेले पई फास्ट रू लास्ट जे सब बेले मोर गोटी ही ऑप्शनल अछि मु केबे ऑप्शनल चेंज करनी जा फल रे मु बहुत समय धरि के ऑप्शनल टा पढी परछि क्वेश्चन आमे गोटे थरो देखि दवा आमे टिके सिलेबस टा स्टार्ट कर दउ ईच चैप्टर ऊपर टिके अंडरस्टैंडिंग आसी जाऊ अरे फास्ट रू आपण को ऑप्शनल नैथिले सेम ऑप्शनल फास्ट आउ लास्ट मोर सब गोटी ही ऑप्शनल मु नैछि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मु ऑप्शनल जहानी सेतरा आपण कोन अछि मोर तो सरी गलानी आपण ऑप्शनल चूज करियारो फंडामेंटल्स मु बतेइल ना फास्ट होची आपण को चॉइस थिबा दरकार सेटा आपण भल लागुथबा दरकार से सब्जेक्ट रो कंटेंट सेति में आपण सिलेबस टा पढंतु किछि ना किछि मटेरियल पढंतु फास्ट रो से रिगार्डिंग लुक 2022 मेंस रो क्वेश्चन डिस्कशन पुष्पांजलि हैव यू कंप्लीटेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल then why are you asking me 2022 mains ro question discussion is it the right chronology आपण क्वेश्चन डिस्कशन फास्ट रू करंती सिलेबस न सरी की look don't be in a hurry this preparation is not like that okay simple भाषा रे म आपण बुझाई दउची प्रिपरेशन ए प्रिपरेशन तरतर हबो नै जो माने भी आपण को कहि दै जंदी जेटा 2 मंथ्स 3 मंथ्स रे आपण रैंक रखि देबे एंड सब किछि जानि जिवे जस्ट लाइंग दे आर जस्ट लाइंग सिंपल कथा होची वेरी सिस्टमैटिकली पढिया को पड़िबो बहुत समय पढिया को पड़िबो आपण मानु मिनिमम 1 ईयर मैक्सिमम यू डोंट नो but my advice is you have to prepare for at least 2 years one attempt you will not guarantee no one has guarantee in one attempt maybe gote eport seport re apan rank न रही पारे but second attempt is a must 2 years you have to study minimum 1 year भी हे जाई पारे न हेले आ गोटे अटेम्प्ट तो आपण माने निजो को दबा कथा जने जदी एते परिश्रम करूची आ गोटे अटेम्प्ट काहे न दबो गोटे वर्ष जदी जने परिश्रम करूची सो 2 अटेम्प्ट शुड बी आ आपण तरतर होंतनी मेंस क्वेश्चन आपण सिलेबस जाननांती पाठ जाननांती क्वेश्चन डिस्कशन करले आपण कोन बुझिबे एटा मो नॉलेज पई तो मो क्लास नउनी मोर तो सरी जाईची बुझी पारुचंती लॉजिक टा बुझंतु आपण सिलेबस सारीबे सिस्टमैटिकली पढिबे और एल्स गोटे दिटा चैप्टर पढिले से दिटा चैप्टर क्वेश्चन देखले बुझी होउची बट एबे जदी मो क्वेश्चन डिस्कशन करबी तार मीनिंग कोन आपन तो कंटेंट जाना नै मु कहि देबी हां एटा ई सब्जेक्ट चैप्टर रो आछि एटा से चैप्टर रो आछि मु कहि देले आपन को कोन लाभ मिलुची सेमी तो मु तो निजे सब कहि परिबी जे एटा चैप्टर रो सेटा कारण मु तो आउ टेस्ट दबार नै कि मते आउ पढिबार नै बट आपण निजे पढिला बेले जो चैप्टर सरीबो हमें सेति बेले सेही क्वेश्चन देखि दवा जे कोठु को क्वेश्चन आसीची हेले आपण जानि परिबे जे हमें कोन पढुचे क्वेश्चन ने कोन आछी आउ मु आपण कोन कहली हमें ईच क्लास रे क्वेश्चंस लिखिबा बुझी परछन तेणु हमें सेही क्वेश्चन पूरा लिखिबा सब बेले सब क्लास रे रादर देन खाली कहि दवा जे एटा एठु पढछि सेटा सेठु पढछि हां सेठु कोन हे गेला पढछि कि हमें लिखिया दरकार ना सो माय अप्रोच विल बी मु आपन को 2 घंटा जाक पढेबा दरकार नै आपन को मु घंटा 15 मिनिट 20 मिनिट रे भी कंटेंट तो बुझेबार अछि मु बुझे दी परिबी देन आपन को आधा घंटा 40 मिनिट लिखिया दरकार इच क्लास रे जोटा कि बेस्ट अप्रोच जदी मु देखिबी आपन माने पार्टिसिपेट करूचंती हां दैट इज विल बी इन द क्लोज ग्रुप हमें जति कि भी पिला हमर जॉइन करूचंती क्लोज ग्रुप हैला परे मुझे देखुची आपन मानकर इंटरेस्ट अछि राइटिंग रे देन आई विल कंटिन्यू दैट फेज जदी मु देखिली आपन माने इंटरेस्ट नौ नांती आई हैव टू फोर्स कि मते फोर्स करिया पडुची लेखंतु देन आई विल क्लोज only I will teach for 2 hours that's it is up to you जदि आपन निजन इंप्रूवमेंट चाहउछन यू शुड राइट इन ए टाइम फ्रेम मैनर इन द क्लास घरे लिखले से टाइम फ्रेम फॉलो करिवेनी एंड से पेपर भी आपन मते देखैबेनी क्लास रे लिखले आपन मते पढी सुनै परिबे और जदि हमें को ग्रुप फॉर्म करथिबे से ग्रुप रे आपन मते आंसर शेयर करि परिबे मु संगे संगे आपन को रिव्यू देबी और एल्स नेक्स्ट क्लास रे रिव्यू देबी जदि आपन सेटा न मानिबे किबा से प्रैक्टिस को करिवा को जिबे नै then mu 4-5 टा क्लास परे I will drop that idea
सो जोटा आपण माने चाहूचंती सेटा आपण टिके एठी टाइप करंतु look prelim syllabus main syllabus will continue simultaneously एमती हबनी आपण prelim syllabus केबे भी सरीबनी okay nobody prepares for the preliminary everybody prepare for the mains preliminary last 3 months thibo you have to join the test series for MCQ preparation is for the mains always prepare for the mains prelim is a separate thing for before exam 2.5 months or 3 months only MCQ practice करूँ nothing called prelim preparation जदि आपण प्रिलिम प्रिपरेशन करछंती इट इज हाफ प्रिपरेशन बिकॉज़ प्रिलिम हैला पर आपण कोन करिवे 3 मंथ्स रे मेन सरीबनी प्रिपरेशन सो वेरी क्लियर कट मु कहि दउ जे आपण मानकु देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी देयर इज ऑलवेज ए प्रिपरेशन ऑफ मेंस सो आपण सबले मेंस में प्रिपेयर हेबे 2 मास थिबो आपण प्रिलिम रो क्वेश्चन सेट करिवा स्टार्ट करिवे फर्स्ट रिवीजन करिवे गोटे मास तापर 2 मास क्वेश्चंस करिवा स्टार्ट करिवे दैट इज द बेस्ट अप्रोच टू प्रिलिमिनरी नेवर प्रिपेयर फॉर प्रिलिमिनरी केबे भी आपनकर सरीबनी आपण डिवीजन ही करि परिबेनी जे प्रिलिमिनरी और मेंस भीतर कोन सेपरेट अछि सो हाउ टू प्रिपेयर हाउ जहां भी आपनकर डाउट अछि वंस वी फॉर्म ए ग्रुप सेठी आपण डेली मते मो संगे इंटरेक्शन करले आपनकर अदर देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो अदर थिंग्स भी हम डिस्कशन करि परिबा सेमति नै जे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढुचे माने आपनकर जदि अलगा किछि प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट अछि आपण माने पचारि परिबेनी सेमिति नुहे यू कैन आस्क मी एनीथिंग ओके क्लास परे 10 मिनिट 15 मिनिट हमें डिस्कशन करि परिबा आपनकर जहां भी डाउट अछि कि जदि जहार होउनी जने पढुची तार मने रहउनी जने पढु ही नाही खाली आस जाई छि प्रिपरेशन को तापर तार इच्छा होउनी सब प्रकार कथा हमें डिस्कशन करि परिबा बट नॉट इन ए ओपन फोरम इट इज क्वाइट ऑब्वियस एंड जो मैंने ऑलरेडी मो क्लास करिसंती दे विल बी वेरी मच कंफर्टेबल एज फार एज मो नॉलेज अछि से माने पूरा कंफर्टेबल फील करिवे क्लास करिवारे जो माने न्यू अछंती once you join you will enjoy जो माने करिसंती you can ask them okay or else माने बी एस्योर थांतु कांसेप्ट आपन को बुझा हे जिवो ओके एंड जो भी 2 आवर्स की जहाँ भी मु क्लास नेबी जति की टाइम you will not feel bored okay जोटी बोर लागिवो I will tell you कि एटा बोरिंग पार्ट किछ ऑप्शन नाही किछटा पार्ट बोरिंग थाए मु भी घोसी लिखतिली आपण भी घोसी लिखिबे सेतरे आ किछि करि होबनी एटा एंटरटेनमेंट नुहे जे सब बेले आपण एंटरटेनमेंट लागिवो एंटरटेनिंग लागिवो सो पाठ पढियार अछि मार्क रखियार अछि रैंक रखियार अछि सिस्टम रो बाहरियार अछि एया ही ऑब्जेक्टिव ना आउ किछि अछि एठी ऑब्जेक्टिव आउ कार कोन एया ही ऑब्जेक्टिव रैंक रखियार अछि मार्क रखियार अछि रैंक रखियार अछि एई सिस्टम रो बाहर जिवार अछि जॉब करियार अछि एतिक त ऑब्जेक्टिव ना आउ किछि ऑब्जेक्टिव अछि बस मो ऑब्जेक्टिव भी शेयर हो आपण मानकु जेतिक दरकार सेति पढियार अछि रोज ग्रुप करी कि तांको इंप्रूवमेंट करियार अछि यस क्वालिफाई करियार अछि ऑब्वियसली सो सेटा पई ऑप्शनल रिलेटेड जहां रहइबो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने आई विल बी हैंडलिंग सो डोंट वरी अबाउट ऑप्शनल्स नेक्स्ट क्लास विल बी इन नेक्स्ट 2-3 days रे नेक्स्ट क्लास कोटे हबो देयर विल बी directly will start public administration okay what is administration what is public administration what is private administration जो माने आगुआ पढिया को चाहउछंती they can start reading what is the meaning of public administration what is the scope of public administration this is okay this chapter you can start but don't ask me any question once I complete you ask me questions what is the meaning scope and significance of administration what is public and private administration what is the evolution how it got evolved time period पूरा केमिति इवॉल्व हैला what is new public administration public administration ने पुनी नुआ आ पुराना कोन न्यू कोन what is public choice public रो चॉइस किछि अछि एडमिनिस्ट्रेशन ने ना जहां मिलिवो सेटा एक्सेप्ट करिया को बाध्य स्टेट वर्सेस मार्केट मार्केट टा बेटी इंपोर्टेंट ना स्टेट गवर्नमेंट बेसी इंपोर्टेंट ना प्राइवेट then new public management perspective good governance management कोन new public management कोन then governance कोन good governance कोन
एतिकी आमे from the next class रो आमे start करिवा meaning of public administration. It will take much time. This two chapter maximum time नबा, but this is the basic pillar. ए दिटा सरी गले things will be very easy. Okay. Okay, so we'll meet in the next class. It will be intimated to you when will be the class held, but these classes are free to all. So I don't know when your close group will start and when we'll have a better interaction with individual. Okay, once we form a group, we'll interact individually. But a classroom individual interact kariya. Then जेहेतु आमे next 4-5 months interact करू ही थिवा. So in the course of time we will know each other. Okay. ठीक ଅଛି. Thank you all for joining. See you in the next class. Good night all of you. Thank you.